industry. Then Madam Hema Mehdi ji, she is our co-organizer, दिल्ली के ITPO, प्रगति Indian मैदान Trade में Promotion Organization under the 10 से Ministry of 18 Industry and फरवरी Commerce. के बीच With प्रगति me, मैदान में Deputy Director वर्ल्ड बुक Guraj फेयर का Malik. शुभारंभ हो रहा है, So उसको we will लेकर brief you प्रेस about कॉन्फ्रेंस this की जा रही flagship है। event of National Book Trust and ITPO, New Delhi World Book Fair. Now, first of all, I will give a curtain raiser about this event, and then my director will give finer details of the event in detail. Now, first of all, it's wonderful to see you all here in Delhi. And as a chairman of National Book Trust, I'm Professor Milind Marathi from Mumbai, and this is my first press conference in New Delhi World Book Fair, about New Delhi World Book Fair. So, New Delhi World Book Fair, as I said, it's a flagship program of New Delhi itself. And New Delhi World Book Fair is committed to its objective of one of the instruments to develop reading culture among the population of this country. And not only this country, even in the world also. No, it will have number of events packed in 10th to 18th February. It is nothing but a literary treat to the book lovers. Book launches, meet the authors, literary discussions. There will be a separate children pavilion because children are the torch bearer of this reading culture right from the tender age of their own. And so children pavilion is one of the very important corner of this book fair. Then there will be a special thematic pavilion also. And this time the theme is Bahubhashi Bharat, Ek Jivanta Parampara. Multilingual India, a living tradition. This is the theme which we are working with, and we will go ahead with this. Now, to brief about this theme, all of you are aware that India has a rich diversity about the languages. You all are aware that in Schedule 8, there are 22 languages listed, but we don't limit ourselves only to that. And we have a number of languages, dialects, and they are all living, they're used actually day to day in different parts of this country. Those languages and dialects are having rich heritage of their culture, of their literature, sahitya, kavita, vyanga. Number of things are there in those languages and dialects. They have their own contributions in the literature of this country and role in national integration also. Because you can identify a same word which means same in different languages. Another important aspect of this theme is in 2020, Government of India has adopted national education policy, and in that policy, heavy thrust on primacy of Indian languages it is given. And it is nothing but that everything, every knowledge can be taken through Bharatiya Bhasha, Indian languages. And that is why it is very appropriate at this point of time to have this special theme, Bahubhashi Bharat, Ek Jivanta Parampara. So multilingual fabric of this country is very important, and we, through this National World Book Fair, we want to respect that fabric. Then another important thing is the Kingdom of Saudi Arabia. They are with us, guest of honor country for this World Book Fair.
And we are very happy that they have accepted our invitation, and a strong 25 people delegation will be there in this World Book Fair from the Kingdom of Saudi Arabia. And all of you are aware that India and Saudi Arabia has got very long, close, warm relations for these two countries. Relations may be cultural, relations may be literary, relations may be business, trade, but we are well knit, emotionally integrated country, and we are very happy that Kingdom of Saudi Arabia is guest of honor country for this particular World Book Fair. Now there will be few major vocabulary of this book fair. I will just narrate the vocabulary and I will hand over the mic to my director so that he will give the final details of each. CEO speak, that is one very important event. The New Delhi rights table so that we can, number of publishers can actually exchange the copyrights. Then there will be a B2B zone, because ours is predominantly a B2C fair, but there will be a B2B zone. So the new concept of festivals of festival. So that is also one very important aspect. Then books for all. This is also one of the very important feature of this World Book Fair. And definitely vibrant cultural programs from Saudi to different parts of India. So at the end, I will say that this particular New Delhi World Book Fair is not only an event, but it is a festival of literature, culture, arts, and knowledge. It's not only fair, it's festival of all these things. So I invite all Delhi people, kids, boys and girls, and youth, adults, and senior citizens, and people from all walks of life, through you, journalists, correspondents of different papers of New Delhi, to get immersed in the world of books in this New Delhi World Book Fair from 10th Feb to 18th Feb. Before I invite our director, I will just give two quotes. When citizens read, the country leads. Padhega Bharat, to Badhega Bharat. Thank you. You, Rajit, please. Thank you so much for extensive details about the New Delhi World Book Fair 2024 edition. At the outset, I would like to thank each one of you for two reasons. First, that you have taken your valuable time. I understand the session is going on and was giving us the importance by being here and covering this event. More than that, last year event was a very big success. And if anything I have to give credit to, it is the outreach that you people have given us, the message that you have taken forward, the kind of information you have disseminated in the ecosystem. Because आज भी अखबार की, प्रिंट की, मीडिया की ताकत है कि लोग उसको यकीन करते हैं. It is because of you, we are able to multiply our footfall. We have to stop the gates. We have to request people not to come in that much of abundance and divide their slots. And we had to request people to kindly, start visiting from different hall other than from one side. That was because of your outreach that you gave us, and I request you again for the same outreach which you provided last year, the kind of coverage and content dissemination. As sir has told, 10 to 18th is the book fair dates. 10 से 18 फरवरी बुक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा. 10 फरवरी सुबह 11 बजे भारत मंडपम में इसका इनॉग्रेशन तय किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे. साथ में हमारे प्रतिनिधि मंडल जो सऊदी अरेबिया हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनके प्रतिनिधि होंगे और एक पूरा विशिष्ट मंडल उनका जो लेखकों का, साहित्यकारों का, प्रकाशकों का वहां से आया है वो वहां मौजूद रहेगा. इसके अतिरिक्त बहुत सारी गतिविधियां इनॉग्रेशन के लिए तय की गई हैं. कुछ विशेष बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. आखिरी वर्ष का अगर बजट उठाएंगे तो सरकार ने इसमें एक प्रावधान दिया कि देश में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, कंटेंट हर भाषा में अवेलेबल हो, सस्ते दामों पर अवेलेबल हो. उसको लेकर शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा.
ये फ्री लाइब्रेरी होगी जिसको राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के नाम से लॉन्च किया जाएगा। लगभग सभी भाषाओं में उसमें किताबें होंगी बच्चों के लिए और वो मुफ्त होंगी। आप कोई भी व्यक्ति उसमें जाके डाउनलोड कर सकता है। इसका पूरा डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन आपको कल वहां मिलेगा। माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का अनावरण और समर्पित देश को कल करेंगे। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे बजट के तहत 2023-24 में आश्वासन किया दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जो सर ने कहा सिटीजन रीड कंट्री रीड, हर हाथ में किताब हो। तो इस आज तकनीकी के युग में हाथ में ना हो तो हर मोबाइल में किताब जरूर हो। तो ई लाइब्रेरी उसी का एक एक्सटेंशन है। इसके अलावा बहुभाषी थीम हमारी रखी गई है इस बार पुस्तक मेले की, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया द लिविंग ट्रेडिशंस। उसको मद्देनजर रखते हुए हम कई किताबों के मल्टीपल एडिशन, जैसे एक किताब के हम 13 भाषाओं में एडिशन एक साथ लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ एक बुक फॉर ऑल कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं, हम मानते हैं और हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग के लिए हम किताबें तैयार करें। एक वर्ग है जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ब्रेल बुक्स भी लॉन्च करेंगे। और पुस्तक मेले में अगर उनके पास अपना आईडी कार्ड है, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनके लिए बुक फॉर ऑल स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है। उन सब बच्चों के लिए फ्री किताबें दी जाएंगी। जो भी आएंगे सबको फ्री बुक दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जितने बच्चे भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड है, रजिस्टर्ड है, अगर वो चाहते हैं, वो फ्री किताब लेना चाहते हैं, तो उनका पुस्तक मेले में स्वागत है। आप आइए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, हम आपको फ्री बुक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल हेरिटेज सीरीज, जिसके तहत हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क को डॉक्यूमेंट करने का अभियान शुरू किया है, उसकी किताबें भी रिलीज की जाएगी। साथ ही साथ जो बाकी की भाषाओं में हमारी किताबें, उनकी मल्टीलिंगुअल एडिशन हम लोग देश को समर्पित करेंगे, ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें कि हाउ मच डाइवर्स इज आवर नेशन थ्रू लैंग्वेज। हॉल नंबर 5 एक मुख्य आकर्षण रहेगा, क्योंकि इसमें थीम पवेलियन को सेटअप किया गया है, जो हमारी मुख्य थीम है। किताबों के कंटेंट के नॉलेज के जरिए उसमें आपको पूरा एक बड़ा एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से उसमें एक ऑथर कॉर्नर भी सेटअप किया गया है, जिसमें इंग्लिश भाषा से जुड़े हुए कार्यक्रम, ऑथर डिस्कशन को रिलीज किए जाएंगे। स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर तैयार की गई एक एग्जीबिशन, जिसको हॉल नंबर 5 थीम पवेलियन में तैयार किया गया है। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च का एक बड़ा योगदान है। उनके और हमारे समन्वय से उसे हॉल नंबर 5 में डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ IGNC, इंडियन जो इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर सेंटर ऑफ आर्ट्स है, उनके समन्वय से हम लोगों ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर एक डिस्प्ले किया है वहां पर। साथ ही साथ उसके बगल में 4 नंबर हॉल रहेगा, जिसको इंटरनेशनल पवेलियन का नाम दिया गया है। उसमें हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है सऊदी अरब, उनका बहुत सुंदर पवेलियन है, उसका बहुत खूबसूरत डिजाइन तैयार किया गया है, बहुत खूबसूरत कंटेंट वहां होगा। वहां आपको हमारे सऊदी अरब के लेखक प्रकाशक, उनसे मिलने का, रूबरू होने का और उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल पवेलियन में इंटरनेशनल डिस्कशंस रखे गए हैं, बुक रिलीज इवेंट्स रखे गए हैं। विशेष रूप से हमारी एक बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना। तो पीएम योजना के जो 1.0 के बच्चे थे, उनको हमने लास्ट ईयर कैंप के लिए बुलाया था, और 2.0 का रिजल्ट हमने कल अनाउंस किया है। वो बच्चे भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वो बच्चे हैं जो 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, इस उम्र के बच्चे हैं, जिनको लेखक के तौर पर जिनका चुनाव किया गया है, ये आने वाले समय में देश के लेखक बनेंगे। उनका ट्रेनिंग कैंप, उनका इंटरेक्शन कैंप, उनका ग्रूमिंग वहां पर 3 दिन के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो भी वहां आपको मिल देखने को और उनसे चर्चा करने को मिलेगा। 3 नंबर हॉल हमने बच्चों को डेडिकेट किया है, जहाँ पर चिल्ड्रन एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो कैलीग्राफी हो, स्टोरी टेलिंग हो, पोस्टर मेकिंग हो, ओरिगेमी, अलग अलग तरीके से बच्चों के लिए एंगेजमेंट एक्टिविटीज रखी गई है, जिसमें बच्चे आकर उसका लाभ उठा सकते हैं। 2 नंबर बहुभाषी पवेलियन, जिसमें भारत की सभी भाषाओं की किताबों के स्टोर, उनके प्रकाशनों की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर हॉल में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई किताबें भी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हर आयु वर्ग के लिए, हर विधा के लिए, हर जॉनर में, हर कैटेगरी के रीडर के लिए कुछ न कुछ वहां निश्चित रूप से मिलेगा। और ये सबसे बहुप्रतीक्षित इवेंट है, जिसके लिए आप हम लोग सभी दिल्ली वासी वेट करते हैं। ये 10 से 18 तक आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। गेट नंबर 5 खुला रहेगा। 5A और 5B से आप एंट्री कर सकते हैं, जिनके पास इन्विटेशन दिए गए हैं। बाकी आम लोग जो आना चाहते हैं, वो गेट नंबर 4 से वहां आ सकते हैं। टिकटिंग के लिए व्यवस्था की गई है, आरडीपीओ ने बहुत सुंदर इंतजाम किया है। स्कैन कोड वहां लगाए जाएंगे, आप स्कैन करके आ सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, स्कूली बच्चों के लिए कोई एंट्री फी नहीं है।
स्कूल के डेलीगेशन लास्ट ईयर भी बहुत भारी संख्या में आए, इस बार भी मैं आपके माध्यम से स्पेशली इनवाइट करना चाहता हूँ स्कूल के टीचर्स और बच्चे डेलीगेशन लेकर वहां आए और पुस्तक मेले का आनंद ले। आने वाले जो टीचर्स हैं बच्चों के साथ, उनके लिए भी कोई एंट्री फी नहीं रखी गई। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए फ्री फैसिलिटीज रखी गई है। साथ ही साथ जो बाकी लोग युवा लोग आना चाहते हैं वो नॉमिनल रेट्स पर 20 रुपया की जो एंट्री है उसको आप ऑनलाइन ITPO की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारे मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं और गेट के पास स्कैन कोड करके भी ले सकते हैं। फिजिकल टिकटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया, आपके मोबाइल में आपका टिकट रहता है। कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप, उनके लिए व्हील चेयर हो या एम्बुलेंस की फैसिलिटीज हो या मेडिकल केयर हो, उन सब की व्यवस्थाएं भी जगह जगह पर की गई है। विशेष रूप से गेट नंबर 4 पर व्हील चेयर्स की प्रोविजन भी रखा गया है। फूड कोर्ट का व्यवस्थाएं हमारे सहयोगी जो पार्टनर है इस मेले के, जो ऑर्गेनाइजर है ITP, उनके प्रतिनिधि हैं, वो भी की गई है। इन सब के अलावा कुछ चीजें हैं जिन पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा। इनोग्रेशन के दौरान एक और बड़ी खूबसूरत चीज इनोग्रेट की जाएगी, जिसे बोलते हैं ई जादुई पिटारा। छोटे बच्चों का जो करिकुलम है, अभी उसका फिजिकल वर्जन आया था लास्ट ईयर, इस साल ई वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2000 के आसपास स्टॉल का लेआउट आपको मिलेगा। 1000 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं के पब्लिशर हैं, 40 से ज्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन है और कुछ स्पेशल एक्टिविटी जैसे न्यू दिल्ली राइट्स टेबल, जिसमें आप राइट्स एक्सचेंज करके, डिस्कशन करके फॉरेन पब्लिशर के साथ आपस में नेगोशिएशन भी आप कर सकते हैं। एक और स्पेशल फीचर हम लोग इस साल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि ये केवल पुस्तक मेला नहीं, एक फेस्टिवल है, किताबों का एक त्योहार है, महाकुंभ है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। जो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल अलग अलग देश के हिस्सों में होते थे, उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आकर अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यवस्थाएं की है। उसमें भारत लिटरेचर फेस्टिवल है, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल है, प्रगति लिटरेचर फेस्टिवल है, सिने दरबार फेस्टिवल है, ग्रेट इंडियन बुक टूर फेस्टिवल है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल थे जिसमें वो अपने लेखक, अपने मॉडरेटर्स लेकर आएंगे और हमारे मंच से अपने कार्यक्रम को यहाँ पर वो टेलीकास्ट करेंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब लेखक आता है तो उसके साथ एक पूरा थॉट प्रोसेस आता है, उसको लोग सुनते हैं, विचार बनते हैं, उससे किताबों की प्रति रुचि पैदा होती है, रुचि से प्रकाशन जगत को लाभ मिलता है और पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम में एक वेल रेड सोसाइटी की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके माध्यम से और भी लिटरेचर फेस्टिवल्स अगर यहाँ आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो भी इन सब का आने वाले समय में लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से जो MP थिएटर होगा उसमें इस बार बहुत सुंदर कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे एक दिन पूरा दिन हमने 14 तारीख को महाराष्ट्र को डेडिकेट किया है। इसी प्रकार से सभी की तरफ से हर रोज एक कल्चरल एक्टिविटी बहुत शानदार तरीके से शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वहां की जाएगी। लद्दाख से एक बैंड आ रहा है, उड़ीसा से है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो फ्यूजन है हमारा आर्ट और लिटरेचर और कल्चर का, वो आपको देखने को मिलेगा। पोइट्री कॉम्पिटिशन मिलेंगे, कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा होगा। यानी कि लेखन की अलग अलग विधाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैसे ढाला जा सकता है, उसको लेकर भी आपको बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज वहां मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी, उनकी लिस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा संस्कृत बैंड है, युगम बैंड है, साधो बैंड है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल कल्चरल डेलीगेशन यहाँ परफॉर्म करेगा। आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन्स की कल्चरल डिस्प्ले कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत की जो अलग अलग विविधताएं हैं उसके जो ब्लेंडेड प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको मिलेंगे देखने को। फोक डांस, फोक म्यूजिक, राजस्थानी बैंड और राजस्थानी फोक म्यूजिक भी मिलेगा, हरियाणा की रागनी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको सूफी कव्वाली भी मिलेगी। तो शाम को जब आप पुस्तकों के संगम से बाहर आए तो आपको कल्चरल थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस भी हम लोग देना चाहते हैं, उसके लिए कल्चरल एम्फीथिएटर को तैयार किया गया है। मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, कहीं पर भी कोई भी टिकटिंग अंदर नहीं रखी गई है। कृपया करके आप ध्यान दें, कोई भी अगर टिकटिंग आपसे दे तो ऐसी कोई टिकटिंग अंदर हमने नहीं रखी है। प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए 11 तारीख को सुबह हमने जितने भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के जो CEOs हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे सऊदी डेलीगेशन है, चाहे वो इटली से हो या लंदन से हो, फ्रैंकफर्ट से हो। लंदन बुक फेयर की टीम यहाँ देखने के लिए आ रही है, उनके CEO यहाँ आ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के CEO भी देखने आ रहे हैं। इटली जो बोलोनिया है उनके बुक फेयर के CEOs भी आ रहे हैं, स्पेन से भी CEO आ रहे हैं। तो भारत में जो बुक फेयर है उसको लेकर बड़ा आकर्षण।
वो देखना चाहते हैं कि इतने स्केल का इवेंट कैसे होता है, क्योंकि B2C कैटेगरी में हम सबसे बड़ा बुक फेयर दुनिया के सामने लेकर जाते हैं, ये हमारी ताकत है और विविधता भी हमारी ताकत है। तो दोनों चीजों को मिलाकर जो एक अट्रैक्शन पूरी दुनिया का हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, हमारी नॉलेज के प्रति हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले कर पाए, उसको ध्यान में रखते हुए सीओ स्पीक का हमने एक आयोजन किया है, जो 11 तारीख को सुबह किया जाएगा। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में उसमें मेनली पब्लिशर टू पब्लिशर मीट होता है। साथ ही साथ जो युवा डेलीगेशन है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी युवा लेखकों को इंटरेक्शन के लिए 11 तारीख को 12 बजे एक इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित किया है, ताकि इन बच्चों को बढ़ावा दिया जा सके। जब वो महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे तो उनकी प्रति जो एक उनकी जो ऊर्जा होगा, जो मोटिवेशन होगा, आप देखिए वो कहाँ जाएगा, उसको क्या नई उड़ान मिलेगी, वो कितना बड़ा सोच पाएंगे, कितना भावी लेखक के तौर पर देश के लिए वो काम करेंगे। तो इस सोच को रखते हुए उनको भी हमने एक इंस्ट्रक्शन रखा है, उनका एक पूरा ट्रेनिंग कैंप रखा है। ये एक बड़ी सी रूपरेखा थी। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि हर भाषा को लगभग रिप्रेजेंटेशन है, सभी भाषाओं की वहाँ स्टॉल्स हैं, किताबें हैं, जो सुविधाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे, नया पवेलियन बन के तैयार किया है डीपीओ ने, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया है। और जहां तक फैसिलिटीज की बात है, चाहे वो वॉशरूम्स की हो, पार्किंग की हो, बहुत प्रचुर मात्रा में पार्किंग अब वहाँ तैयार हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट एकदम क्लियर है। सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह कैमरे लगा दिए गए, ताकि कोई अव्यवस्थाएं ना हो, जो कुछ हो तो हम उसको कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस को जो गेट के पास कमांड कंट्रोल के लिए हम हैंड ओवर करते हैं। फायर एम्बुलेंस है, सेफ्टी है, मेडिकल कवर है, एम्बुलेंस है, पानी का है, फूड कोर्ट भी दिया गया है। लगभग सभी गेट अवेलेबल है। मेट्रो से आने वाले लोग 10 नंबर से आप सीधा चल के आएंगे तो 1 नंबर ऑल को हिट करेंगे, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। जो 4 नंबर गेट से आएंगे वो 5 4 3 2 1 से हॉल को विजिट कर सकते हैं। उन सबके बीच में एम्पी थिएटर है। मीडिया बंधुओं के लिए 5 नंबर हॉल के सामने एक मीडिया सेंटर बनाया गया है। आप लोग व्यस्त रहते हैं, समय की कमी होती है, अगर आपको देर से आने पर कुछ फुटेज चाहिए, कुछ फोटो चाहिए, प्रेस रिलीज चाहिए, आने वाले दिन का कार्यक्रम चाहिए, अगले वाले दिन की रूपरेखा चाहिए, या कोई भी है, तो वहां पर हमारी जो मीडिया सेल है अमित जी, वो आपको हमारी टीम से जोड़ देंगे। आप फोन पे भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ आ भी सकते हैं, और मीडिया बंधुओं के लिए अलग से स्पेस भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास आपका एक्रेडिटेशन कार्ड होना जरूरी है। तो की बात वन बाय वन मोटा मोटा मैंने आपको कवर कर दिया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने सहयोगी माय कलीग आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ kindly give a small overview about your delegation, your participation and activities. After that, request our co-organizer ITPO at Himaji to give their presentation, and then we will take all the questions in detail at length as long as you want. Thank you. Thank you. Thank you. सुन पा रहे हैं आप? Thank you. Thanks a lot for this invite, and thank everybody actually for attending this press conference. We're very delighted actually to be here in this conference and to review the participation of Saudi Arabia's guest honor in India or New Delhi World Book Fair. This event has been a long-awaited event for us actually to participate in India at large and to be an essential part of the book fair itself. Saudi Arabia has a strategic positioning when it comes to a guest of honor and book fair, and this makes New Delhi makes it very important for the strategy to participating in the book New Delhi book fair as soon as we can. And I want to thank the book fair management actually for accepting or extending the invitation for celebrating the guest of honor for this year. The relationship between India and Saudi Arabia is not new. Has been there for more than 7 decades. And when we're talking about the
the relationship between Saudi and India. It's not only economic, it's not only business and commercial. It extends all aspects of life, social, cultural, and you name it. Since the opening of the first consulate actually in India, Saudi consulate in 1947, followed by the embassy, the relations are strengthening, I would say, by the day between India and Saudi Arabia. And I think it was strengthened again and extended the strength when His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman visited India in 2018 and signed many MOUs, extending all aspects of the government work, and included the MOUs regarding the cultural affairs between the two countries. I think the participation this year comes to commemorate this and to officiate this MOU as one of the things that we're working on to activate the cultural relation between India and Saudi Arabia. As I said, maybe the relations between the two nations are not new. We can see books being published in the late 19th centuries and late. Oh, my God. This is first time मेरे सामने इंटरनेशनल बेसिस. हाँ. Okay, so I was saying about the old or heritage books that has been written by. ये तो काफी बेचती है इंडिया में पावर से. Okay, was written by Indian scholars in the late 19th and late 20th centuries. An example of Siraj al-Haramain and the Mirror of the Arabs by Jamal Hussein and by Nader Ali. It shows how engaged the Indian and Saudi cultures are to each other. As per their mandate, the Saudi Cultural Mission here in India trying to do many cultural seminars, which with intellectuals from the Indian and Saudi sides, and I think it's doing a great job in this regard and transferring the culture across both countries. And it's a great opportunity for us this year for the Saudi mission in New Delhi to showcase a different type of participation in the Saudi culture. So the delegation in book fair and the New Delhi book fair is not only books and publishing. We try to showcase the whole cultural scene of Saudi Arabia. So the Ministry of Culture in Saudi has 11 commissions under the umbrella of the Ministry of Commission, which takes care of the content, literature content, and publishing industry on the commercial side, and also the translation of these contents from and to the Arabic language. In this pavilion this year, with literature publishing and translation commission is heading the delegation, the Saudi delegation for the book fair, along with the Heritage Commission, which takes care of the Saudi heritage when it comes to preserving and also regulating the body. And also we're accompanied by the Music Commission and Film Commission, as well as the Culinary Arts Commission. Also, as we are designing the pavilion, it's essential for us for the two nations to know about each other, what the aspect of fashion. And it happens that we have the Fashion Commission and the Ministry of Culture, so it's one of the main parts of the pavilion, Saudi Pavilion.
Also, we're accompanied by Keegan Aziz Center, which takes care of the Saudi history and the documentation of the Saudi nation's history from the past until now, and started continuously documenting this. So we're intending to for this participation to showcase the Saudi culture for the Indian public. Uh, we want to showcase the main writers, the main aspects of the culture. We cannot we cannot provide all of the information about everything, but we're trying to select whatever we think is relevant to the Indian people, and so that's what we mainly intend for this pavilion. And also, we were intending to raise the awareness about the Saudi cultural scene, uh, Saudi arts, Saudi heritage, Saudi national talents, and all of the 16 cultural sectors that's under the UNESCO. An essential part of our participation and this year is to create this partnership with the Indian parts. We have one of the major events that's happening every year in Saudi Arabia is the International Book Fair. And we've had some Indian participations in the past from the Indian publishers into the book fair, but we think it's still until now it's not as expected or as much as needed participation from the Indian side through the International Book Fair. Given that there is a huge population, a huge Indian population living in Saudi and living in Riyadh particularly, and we think we have to cater for this population more and more, and there is an opportunity for the Indian publishers to do so. So, in this year's participation, we're intending to kickstart this participation by partnering up with the Indian counterparts. And also, as I began my speech, I was talking about the pavilion. It's not only books and writers and only literature. It's a whole daily projection of the cultural scene of Saudi. Among which we have the parts that are designed to attract the crowds to the Saudi pavilion. So we took care of the design to represent the Saudi identity. We worked with the United Fair to allow us to present more of the dances, more of the music, more of the film industry, Saudi, and this book fair. So we hope this produce more foot traffic to the pavilion, so it gives us or allow us to showcase the Saudi culture to the Indian people. And it's very important to us and very dear to our hearts that Saudi culture has high value for us, and we want to showcase it to the world. And essential part of the world is the Indian people. So we want everybody visiting the book fair to actually take part in the pavilion and take a look at what Saudi has to offer when it comes to culture. And I also extend the invitation that the director had for new people to actually come and check out the book fair. And also, the Heritage Commission is participating with us in this pavilion, so we're showcasing a lot of heritage from the Saudi part. The Saudi tourism movement recently focused on the heritage and how important it is to a lot of people. And one of the main maybe target audiences is the Indian people. And we're showcasing some of the culture that is our touristy culture in the pavilion as to give a small taste to what you can expect when you come to
Saudi to visit actually as a tourist. A lot of places that was enjoyable. I hope we can deliver a great message throughout our participation in New Delhi this year. I'm again very excited. We're very excited as a delegation to take part in the New Delhi World Book Fair. Um, it's a great opportunity for us, and we're dedicated to take advantage of every single minute of this participation to come up to get most out of it. And we hope to see everybody actually in the pavilion, and we hope to end this world book fair successfully and deliver the message that we will come. Thank you. As co-organizer, Himachi, I request you to kindly cover up the points from ITPO. Mr. Malik, you covered the points very well in your presentation. Everything about the organization of the fair, बहुत अच्छी तरीके से Mr. Malik already बता चुके हैं. But हम as प्रगति मैदान में भी book fair is one of the most popular events जो hold held होते हैं. And it's a must go for every book lover or even non-book lovers जो भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ना सीखें, माने फिजिकली बुक्स को ग्लांस करें, उसकी आदत डालें. तो बुक फेयर एक बड़ा ही ऐसा इवेंट है जिसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के जितने बुक से रिलेटेड कोई भी वो है वो तो विजिट करते ही करते हैं, और फ्रॉम दूर दूर से भी लोग आते हैं. हमने जो देखा है इसमें हमारी बस यही है कि एज आईटीपीओ में हम कह रहे हैं कि आप बिना फिजिकल टिकट एक्सपेक्ट करते हुए प्लीज गेट पे मत आइएगा. ऑनलाइन में ही टिकट्स मिल रहे हैं और सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस की लिस्ट भी हम आपको अगले 1-2 दिन में डाल देंगे वेबसाइट पे. एनबीटीपी और आईटीपीओ दोनों की वेबसाइट पे आ जाएंगे, और किसी वजह से आ भी गया तो वहां पे स्कैन कोड्स होंगे जिसको कि स्कैन करके वो आराम से एंट्री कर सकते हैं, तो उसी में पेमेंट होगा. एंड आई वुड इनवाइट एवरीबडी टू कम टू द बुक फेयर फॉर अ डे आउट. अच्छा मौसम है, बुक्स तो आप हॉल में बुक्स देखिए, बाहर आइए, धूप सेकिए, कुछ खाइए, कल्चरल प्रोग्राम्स एंजॉय करिए. सो डेफिनेटली वी इनवाइट थ्रू यू every person to come and visit the book shop. Thank you so much. Thank you so much. मैं बस एक बात पूछूंगा आपसे पहले, एक बात लास्ट बात, फिर आपकी बात सुनेंगे हम. आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इनोग्रेशन के लिए आप गेट नंबर 7 गेट नंबर 7 पे 11 o'clock से पहले आ जाएंगे. हमारी टीम आपको मदद देने के लिए वहीं पर रहेगी. आप अपना कार्ड साथ लेके आइएगा. गेट नंबर 7 से सभी मीडिया बंधुओं के लिए एंट्री की व्यवस्थाएं की गई है. आप वहां जाएंगे, सीधा आप डायरेक्टली शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे. अगर आप 5 या 4 या किसी और से आएंगे, आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. हमारी टीम गेट नंबर 7 पे आपको मदद करने के लिए, हमारी टी शर्ट पहने हुए हमारे वॉलंटियर्स, हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स आपको तुरंत डायरेक्ट एक्सेस देंगे. जस्ट यू हैव टू शो योर आई कार्ड, दैट इज ऑल. इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ. सर जी, Sir, as you said, India and Saudi Arabia have a very good relation in between. So far as the business and other concerned, we have a very good relation. But we don't know about the relation with the